हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोजीशन ऑफ इमेज प्लेन एंड मैग्नीफिकेशन इन ऑप्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ए ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग ऑब्जेक्ट प्लेन दैट इज़ PA passing through P and A point, having distance d1 from the first refracting surface and then the image plane that is SB से जो पास करता है that is the image plane having refractive index 1 mu3 that is equal to 1 and had it at a distance d2 from the second refracting surface. Now this system consisting of translation from P to Q, then Q पे refraction होगा, Q to R again translation, R पे refraction and R to S there is translation. तो using translation and refraction matrices we can find the position of image that is y2 and lambda2 को हम find कर सकते हैं. तो let us find here the coordinate of point P are lambda1 y1 and Q coordinates are lambda1 dash y1 dash and R coordinates are lambda1 double dash or y1 double dash and S coordinates are lambda2 y2. Now P to Q there is translation. P to Q translation of the ray So using translation matrix we can find the coordinates lambda1 dash y1 dash. So lambda1 dash y1 dash in the column matrix is equal to a translation matrix that has the value 1 0 d by mu, distance by mu. This distance is negative sign, so minus d1 by mu, refractive index is here 1 and here is element 1 into initial coordinates that are lambda1 y1 in the column matrix, lambda1 y1. This is the first translation matrix of the ray from P to Q. We can find the coordinates of point Q, that is lambda1 dash y1 dash, by using translation matrix into initial coordinate, that direction cosine of the ray at this point and height above the principal axis of the point, that is lambda1 y1. कॉलम फॉर्म में हमने लिख लिया. ऐसे ही अगर हम SB जो प्लेन है, इमेज प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज प्लेन, इमेज प्लेन या इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज lambda2 y2, कॉलम में लिखेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट्स को, दैट आर आल्सो द गिवन बाय ट्रांसलेशन फ्रॉम R to S. क्या होगा, ये भी ट्रांसलेशन होगा R से S तक, ट्रांसलेशन फ्रॉम R to S से हम इसको दे सकते हैं. तो क्या होगा, R to S ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को यूज करो, दीज आर द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, दीज आर फाइनल कोऑर्डिनेट्स, देन lambda2 y2 इज गिवन बाय ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, लिखो 1 0 d by mu, d डिस्टेंस इज d2 पॉजिटिव होगी एंड बाय mu इज हेयर 1 एंड दिस इज 1 इनटू इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर lambda1 डबल डैश y1 डबल डैश, lambda1 डबल डैश और y1 double dash. This is equation number 2. Okay, now we use an optical system, this system. In this system we use a system matrix for this system and the system matrix is written as system matrix S for the optical system from Q to R. Okay class, now take system matrix for this optical system is S. In the previous lecture S has the value B minus A minus D and C. If we use the system matrix for this whole optical system, then the coordinates of point R, that are the value lambda1 double dash y1 double dash, can be written, this is initial point and this is final point, then the final coordinates are lambda1 y1 double dash, ठीक है, in the matrix form is written by using the system matrix, that is B minus A minus D into C with initial coordinates, that is
lambda 1 dash or y1 dash. Okay, this is equation number 3. So using these three equations we can find the magnification टर्म्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो अब क्या करेंगे, अब फाइनल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको मॉडिफाई करेंगे. देखो अगर लैम्डा 1 डबल डैश y1 डबल डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स. इस वैल्यू को यहाँ से इसमें पुट कर दो. इसकी जगह हम रख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 डबल डैश y1 डबल डैश दैट इज b माइनस a माइनस d इंटू c विद कोऑर्डिनेट लैम्डा 1 डैश और y1 डैश. ओके, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, जो लैम्डा 1 डबल डैश y1 डबल डैश था उसको रिप्लेस कर दिया इस मैट्रिक्स से. अब क्या करेंगे, इस लैम्डा 1 डैश y1 डैश को भी रिप्लेस कर देंगे यहाँ से. तो इसकी वैल्यू को और यहाँ से इसको रिमूव करके इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो फाइनल कोऑर्डिनेट्स यूजिंग ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फर्स्ट. ये वैल्यू यहाँ पे रखो, इसकी वैल्यू को ये रख दो दैट इज़ 1 0 माइनस d1 माइनस d1 और 1 इंटू लैम्डा 1 y1. So this is the final coordinates and this is system matrix for this system only. Then by the product of this translation matrix and this translation matrix in this order, we can use initial coordinates multiply by these three matrices, final coordinates are there. Okay, अब just product करेंगे इन matrices की. नाउ प्रोडक्ट पहले इस मैट्रिक्स की इसके साथ करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 2 y2 विल बी 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू माइनस डी, तो ये आ गया b. ओके, देन 1 इंटू माइनस ए 0 इंटू सी दैट इज माइनस ए. नाउ this row with this column d2b minus d, d2b minus d. Okay, now this row with this column minus d2a minus d2a a minus d2a plus c. कुछ नहीं किया, जस्ट फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, first element is b क्योंकि b with 0 into d that is b. First row with the second column that is minus a plus c 0 that is minus a, d1 into b plus minus d, and this row with the second column second element 2 to element d2 into a with negative sign plus c into 1 that is c. Now this matrix is 1 0 minus d1 into 1 and this becomes lambda 1 by 1. ओके, फिर फर्दर अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और करो दो मैट्रिक्स की, दैट इज b माइनस d1a b माइनस d1a. फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम a1 टू एलिमेंट दैट इज 0 माइनस a. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2 1 एलिमेंट this with 1 that is d2b minus d. Okay, and with minus d1 into this value, so minus minus plus d1 d2 into a plus minus minus d1 into c. This is a21. Now second row with second column a2 to element here that is 0 and this is minus d2a plus c. Okay, into lambda 1 y1. Now this is the system matrix for the whole system. From comparing these elements, product of the elements with the column matrix, so here this becomes first element, again multiply this with this that is b minus d1a times lambda 1 plus minus a into y1. Okay, and this one multiplied by this with this d2b
minus d plus d1 d2a minus d1 into c multiplied with lambda 1 plus minus d2a plus c into y1. ये सिंपल एलिमेंट्स कॉलम मैट्रिक्स आ गई. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम a11 that is b minus d1a into lambda 1 minus a into y1. Now that element with this column a21 elements, एक column का जो second element होगा that is a to b minus d1 d2 this with lambda 1 plus this with y1. Okay, this has the value lambda 2 y2. Now compare the coordinates. Lambda 2 has the value equal to this and y2 has the value equal to this. From here y2, comparing these matrices, y2 has the value d2b minus lambda d2b minus d2b plus d2b minus d d2b minus d plus d1 d2 plus d1 d2 into a minus d1 into c into that is the value lambda 1 plus minus d2 a plus c into y1. Okay, this is the value. This if we take that objects are point objects, ठीक है, if objects and image are point object and image positions are at point, the object is point object, then this y1 is becomes 0 and similarly y2 is also 0. Okay, तो consider these values. y2 को भी 0 ले लो फोर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, y1 को भी 0 ले लो. यहाँ से क्या आ जाएगा d2b minus d plus d1 d2 into a minus d1c into lambda 1, this will becomes 0 के इक्वल हो जाएगा. lambda 1 0 नहीं होगा क्योंकि पैराक्सिलरी मेक्स सम एंगल, सो इट नॉट नेसेसरी 0, देन दिस टर्म इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें क्या फाउंड हो गया कि जो ये वैल्यू है d2b माइनस d प्लस d1 d2a माइनस d1c, दैट इज दिस वैल्यू, दिस शुड बी 0. तो हमने यहाँ से यही कंडीशन ले ली, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. ओके, नियरली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए y1 y2 को 0 करेंगे तो आपका ये तभी पॉसिबल है कि जब आपकी ये वैल्यू एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो यहाँ से आपको फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं जो lambda 2 y2 has the value that is equal to b minus d1a, or this is minus a, that is 0, and this is minus d2a plus c into that is lambda 1 or y1. So this is system matrix for the whole system. This is a system matrix for the whole system. Now again writing the values here, y2 becomes, y2 is second element, that is multiply of this row, second row with the first column, 0 into lambda 1 plus minus d2 into a plus c into y1. From here y2 is equal to minus d2 times of a plus c into क्या होगा, y1. Now y2 by y1, that is magnification, linear magnification, that is size of image ratio to the size of object, ratio of size of image to the size of object, linear magnification, that is written by m. So this has the value minus d2a plus c. Okay, तो क्या करेंगे, minus d2, minus of this distance with a plus c gives the linear magnification. ठीक है, where a and c are the elements of this system matrix. Okay, now also we know that the determinant of system of matrix is always equal to 1 क्योंकि it is product of translation and refraction matrices.
so its determinant is using the property of determinant is equal to 1. Okay, तो इसका determinant और solve करेंगे, that gives the value again using this product of this b minus d1a into minus d2a plus c is equal to minus 0 इक्वल टू क्या होगा 1. यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे दैट इज़ b माइनस d1a हैज़ द वैल्यू 1 बाय माइनस d2a प्लस c दैट इज़ 1 बाय m, दैट इज़ 1 बाय m. ओके, तो सो दिस एलिमेंट दैट इज़ b माइनस d1a हैज़ द वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ मैग्निफिकेशन एंड d2a plus c has the value of magnification, okay, is equal to m from here. Okay, so using these value we can find the coordinate final lambda to y1 in terms of magnification, that is b minus d1a is equal to 1 by m. ठीक है, and minus of a is here, okay, that is 0, and this element is magnification m into that is lambda 1 by 1. So this is the topic image and image plane and the optical system, ठीक है, in terms of magnification. ठीक है, तो this is the matrix, system matrix for this optical system, and this has the value 1 by reciprocal of magnification minus a, 0 and magnification. These are the elements. So thanks for watching.